anything that interferes with metabolism in such a dramatic way can obviously affect the mind. Whatever happens in the mind affects the body. They're interrelated. We are now beginning to see some early signs of depression, suicidal ideation. आपने सोचा है कि एक दवा जो वजन घटाने के लिए बनाई गई हो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बड़ा असर डाल सकती है? आजकल वजन घटाने की दवा ओज़ेम्पिक को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि भारतीय अमेरिकी लेखक और इंटीग्रेटिव मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने इस दवा से जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाली संभावित खतरों पर चिंता जताई। उन्होंने इस दवा के साइड इफेक्ट्स पर गंभीर चिंता जताई है, खासकर इसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को लेकर। ओज़ेम्पिक जैसी दवाइयाँ मेटाबॉलिज्म पर बहुत गहरा असर डालती हैं, जिससे आपका शरीर खाने को प्रोसेस करने के तरीके को ही बदल देता है। ये दवा आपकी भूख को दबाती है, जिससे आपको लगता है कि आप फुल हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। उन्होंने इसे गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी से कंपेयर किया, जहाँ बिना सर्जरी के ही शरीर में बड़ा बदलाव देखा जाता है। असल में जब कोई दवा आपके मेटाबॉलिज्म को इतना ड्रामेटिकली बदल देती है तो इसका असर आपके माइंड पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा जो कुछ भी शरीर में होता है उसका सीधा असर दिमाग पर होता है, और जो कुछ भी दिमाग में होता है उसका असर शरीर पर पड़ता है। ओज़ेम्पिक के इस्तेमाल से डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स जैसी मानसिक समस्याएं देखने को मिली हैं। हालांकि ये दवा उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है जिन्हें सीवियर मेटाबॉलिक कंडीशन या डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारियां हैं, लेकिन इसे सिर्फ वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर चोपड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की दवाएं सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं लाती बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी बड़ा असर डालती हैं। इसलिए अगर आप ओज़ेम्पिक जैसी वेट लॉस ड्रग्स के बारे में सोच रहे हैं तो इसके फायदे और नुकसान दोनों को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। आइए अब जानते हैं डॉक्टर चोपड़ा ने इस पर क्या कहा। Is Ozempic personality and how these weight loss drug affects your mood, your mental personality and all? Well, anything that affects metabolism that drastically, and Ozempic and these weight loss drugs do that. Biologically, it creates a false sense of satiety, and it's almost like doing surgery to a patient, very dramatic surgery. You know, people used to have gastric bypass, etc. Now Ozempic achieves the same process. So anything that interferes with metabolism in such a dramatic way can obviously affect the mind, because whatever happens in the body affects in the mind, whatever happens in the mind affects the body. They're interrelated. And we are now beginning to see some early signs of depression, suicidal ideation. Doesn't happen to everyone, but it's definitely a risk. Having said that, these drugs do have a role in people who have crisis, you know, for say severe metabolic disease or diabetes and so on. But because again celebrities use it to look better, and celebrities, most entertainment celebrities are dysfunctional and depressed anyway, so it's aggravating the disorder, and people who want to be like them, it's aggravating their disorders too. So are you getting such patients, sir? Huh? Such people? Are you getting these cases? There are a lot of people who are being identified now, yes. Sir, mental health itself is an upcoming pandemic. How to deal with it? Mental health is a pandemic because the mind by definition is never healthy. So it's not even a good term. It's politically incorrect for me to say it, but the mental health crisis is a spiritual crisis. So when you deal some problem which is created by the mind is never at peace. अगर आप खुश हैं आज तो आपको एंजाइटी है कि कल खुश नहीं होंगे. अगर आप नहीं खुश तो एंजाइटी है खुश कैसे होंगे. अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप वरीड हैं कि पैसे जब नहीं होंगे या क्या होंगे, आपकी वो आइडेंटिटी बन जाती है. तो आप पुअर हैं तो आप रिच बनना चाहते हैं. आप रिच हैं तो आप एंजाइटी है कि ये सस्टेन कैसे करेंगे. सो माइंड इज ऑलवेज
vacillating. Hot, cold, pleasure, pain, joy, sorrow, rich, poor, up, down. So how do you treat a disease that's created by the mind? By the mind. So what we have is a spiritual crisis. Spiritual means self awareness नहीं है. लोग अपनी सेल्फ, जो आपका जो बॉडी माइंड है वो आपकी सेल्फ ही है, आपका सेल्फ नहीं है. मनोबुद्धि अहंकार जो कहते हैं ना, उसकी प्रोजेक्शन मनोबुद्धि अहंकार ये है, जैसे प्राणा कहते हैं और उसका क्या अन्नमय कोश कहते हैं. पर ये मॉडिफिकेशंस है चेतना की, चेतना जीवात्मा की. जीवात्मा spontaneously self-regulating है, spontaneously self-regulating, self-evolving, self-creative and correlation. So अगर आप you can go beyond the mind body, then only then you have some solution to the mental health crisis. तो solution mental health crisis योग है, जो हम कहते हैं यम नियम, social emotional intelligence, regulating the body through breath, pranayam, yoga, asana, understanding कि body चेतना की awareness है, dharana, focused awareness, dhyan, meditation, samadhi, no mental illness, only enlightenment. So we are focusing on the darkness with the darkness instead of bringing the light. How to deal with the children, sir? Because children are also Children के साथ खेलना चाहिए, और हम चिल्ड्रन को बीमार कर रहे हैं. चिल्ड्रन हमारे टीचर हैं, दे आर स्पॉन्टेनियसली जॉयफुल.